Hello students, I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, force and pressure. Okay, so let us start with the force. What is force? Force is a push or pull. Force is a push or pull. It is the best and shortest definition for the force. But this definition is not sufficient. Okay. So what is force? Force is a push or pull which can move a object at rest. Okay. जो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे हो उसको चला दे. ठीक है, तो इस टाइप का पुश और पुल क्या हो जाएगा हमारे लिए? फोर्स. ओके. Force is a push or pull which moves a object at rest, which stops a moving object, which changes the direction of the object. ठीक है, तो हमारे लिए फोर्स क्या हो जाएगा? एक पुश और पुल है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था वो चलने लगता है, या चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. ठीक है, तो व्हाट इज फोर्स? इट इज अ पुश और पुल. ओके, सो एक्चुअली यू कैनॉट सी द फोर्स. आप फोर्स को देख नहीं सकते, बट यू कैन फील द अफेक्ट ऑफ द फोर्स. ओके, अभी आपने देखा जस्ट कि ऑब्जेक्ट जो है चलने लगा. जब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, एक पुश और पुल अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग. ओके, सो इफ वी से if I ask you, have you seen any force there? No, you haven't seen any force, but you have seen the effect of force. What is the effect of force there? That object started moving, isn't it? So the next effect, if we consider, the moving object come to rest, isn't it? तो क्या आपने यहाँ पर force देखा? No, not at all. You are not able to see force here, but you are able to see the effect of force here as well. In the same way, in the change of direction of the object or a body, you just see the effect of the force. You cannot see the force. Okay, so let us define the force again. What is force? A push or pull which can move a object at rest, or which can stop a moving object, or which can change the direction of the object. Okay, so this is our force. Now if we talk about force, then you can see, let us talk about force more. You have seen that a object started moving, है ना? तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा? चलने लगेगा, isn't it? और if I say, अगर वो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलने लगता है जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं, isn't it? एंड इफ आई से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, सपोज वो एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है. ओके, नाउ इफ यू अप्लाई अ अपोजिट फोर्स, उसको रोकने के लिए आपको फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, isn't it? और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आपको जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है ऑब्जेक्ट को, उस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ फोर्स लगाऊं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैं उसको आगे की तरफ फोर्स लगाऊं तो वो पीछे की तरफ चलना शुरू कर दे. नो, नॉट एट ऑल, isn't it? If take an example, if a box is kept on a table, okay, and if I push that box in the forward direction, and if I push that box in the forward direction, then what happens? The box move in the backward direction or in the forward direction? The block will move in the forward direction. Why? Because the direction of applied force is in the forward direction. Okay, so we can say that force depends on the direction of the force applied, या motion depends on the direction of the force applied, or effect of force depend on the direction of force applied. Okay, so force is a quantity which depends on two things. Okay, that is its magnitude and direction. ठीक है, magnitude की बात करें, you know what is the unit of force? If we discuss about the unit of force, the unit of force is Newton. Okay, जैसे distance की unit क्या होती है? मीटर. Okay, वैसे ही force की unit क्या होती है? न्यूटन. So if I say the force is 2 Newton, ठीक है, तो ये जो 2 है, this is the magnitude of the force. Okay, और अगर हम लोग बात करें 2 न्यूटन
in the forward direction, 2 Newton in the forward direction. So यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं दैट इज 2 न्यूटन, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हम लोग उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है. ओके, सो फोर्स डिपेंड्स ऑन two quantities, that is its magnitude and direction. Okay, so let us come back to the chapter and learn more about force. Now let us recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? What do you do? Actually we kick that football, isn't it? Then only it moves. या बिना किक के वो मूव कर लेता है, या बिना आप उसको टच किए मूव करवा सकते हो फुटबॉल को? नॉट पॉसिबल. We have to apply a force on that football. Okay, so what do you do to make a moving ball more faster? हमें उस पर भी क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है. अगर कोई बॉल चल रही है और उसे मुझे और तेजी से चलाना है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉल. ओके, सो हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? वो एकदम से बॉल को पकड़ लेता है ताकि वो फोर्स जो है वो भी क्या करता है, फोर्स लगाता है ना, इजंट इट? So, a hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? So, these are all examples of force being applied by those person, okay, or by those particular individual. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, isn't it? Pushed, thrown or flicked. What is force? So we have learned about the force. What is force? The force is a push or pull which can move a object at rest, or which can move a object with faster rate, isn't it? Or with faster speed, or which can stop a moving object, or which can change the direction of the object. Okay, so this is force. Thank you.